अगले वीडियो मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। विच सुल्तान, एक खिलजी डायनेस्टी का है। विच सुल्तान डिमांडेड हाफ द क्रॉप्स ऑन लैंड आफ्टर मेजरमेंट एज रेवेन्यू। तो ये किसने, अलाउद्दीन खिलजी। ही फिक्स्ड 50% खर्च लैंड टैक्स बेस्ड ऑन एक्चुअल मेजरमेंट पे। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम शुरू किया, ठीक, लेकिन फोर्स नहीं किया, मतलब डिड नॉट फोर्स मेजर टैक्सेशन। बलबन स्ट्रेंथन द सेंट्रल अथॉरिटी बट डिड नॉट अल्टर टैक्सेशन पॉलिसीज। मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो इम्पोज्ड 50% टैक्स बट इट वाज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रोडक्शन के हिसाब से था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का एक्चुअल मेजरमेंट के हिसाब से था, ठीक। इसमें मोर देन एबो होगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने ये किया था। अलाउद्दीन सिस्टम वाज मोर स्ट्रक्चर्ड एंड साइंटिफिक, ठीक। मोहम्मद बिन तुगलक टैक्स इन दोआब वाज बेस्ड ऑन एजम्पशन लीडिंग टू फेलियर्स एंड पेशेंट्स रिवॉर्ड्स, ठीक। एजम्पशन करके वो था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अलाउद्दीन खिलजी। ही कलेक्टेड रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, बिल्कुल सही है। ही इन्फोर्स्ड रेवेन्यू मेजर्स इन हिज इंटायर एम्पायर, नहीं, सिर्फ दिल्ली और नियर बाई रीजन्स पे था। ही एबोलिश द पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नेंस, बिल्कुल सही है। मतलब जाता था, मतलब वो करता था, लूटता था, फिर चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेता था, पैसा लेता था। अलाउद्दीन रेवेन्यू सिस्टम, उसको क्या कहते थे, दीवाने मुस्तक राज। स्ट्रेंथन द सेंट्रल अथॉरिटी। ही टुक टैक्स कलेक्शन राइट्स फ्रॉम फ्यूडल लॉर्ड्स जैसे खत, मुकद्दम और चौधरी। Measuring cultivated land was a revolutionary step, preventing overestimation and tax fraud, ठीक। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली, बिल्कुल सही है। ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस टू आर्टिसंस बिल्डिंग हिज पैलेसेस इन दिल्ली, अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। अलाउद्दीन इंट्रोड्यूस्ड ए प्राइस कंट्रोल सिस्टम टू सस्टेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। He fixed the price of food grains, cloth, horses, and essential items. The real reason was to support military expansion, not to lower artisan wages. Which Sultan introduced market reforms? Apna Alauddin Khilji. He implemented strict price control system. Implemented Sahane Mandi market controller to monitor market prices. Failure to obey the price regulation led to severe punishments. Who among the following Muslim rulers enforced a strict price control system during his time? Alauddin Khilji. Iltutmish introduced Iqta system but not price control. Muhammad bin Tughlaq experimented with currency, not strict price control. Sher Shah Suri introduced revenue and administrative reforms but not a controlled price system. Alauddin's price control was unique in world history at that time. Barani record that failure to follow price regulation led to severe punishments. The market control system was introduced by Alauddin Khilji. Ghiyasuddin focused on administrative reforms. Jalaluddin Khilji do not implement market regulation. Balban maintained discipline in the nobility but did not introduce price controls. Alauddin's system included controlled pricing of grains, cloth and livestock. Sahane Mandi, ये क्या है, ensured strict complication with price regulation. Economic policies of Alauddin Khilji. Fixed 50% kharaj land tax based on actual measurements. Confiscated lands from feudal lords and brought them under Khalisa land. Implemented strict price control policies to maintain the army and economic stability. Administrative reforms. Removed टैक्स कलेक्टिंग राइट्स फ्रॉम लोकल लैंडलॉर्ड्स जैसे खत, मकदम और चौधरी. क्रिएटेड द डिपार्टमेंट दीवाने मुस्तक राज टू इम्प्लीमेंट टैक्स रिफॉर्म. reduce the power of provincial governors to strengthen central authority. ठीक. Military reforms. Maintain a standing army and introduced branding of horse, dog and soldier record. Hulia defeated Mongols multiple times and expanded the empire through military conquest. Market reform. Controlled prices of essential goods to prevent inflation. Established Sahane Mandi to regulate market and punish violation. ठीक. ये देखते हैं हम लोग क्या मतलब डिफरेंसेस था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में. अलाउद्दीन खिलजी ran
land revenue 50% based on actual measurement, और मोहम्मद बिन तुगलक का 50% बट बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। मोहम्मद बिन तुगलक का नो फिक्स्ड प्राइसेस वेयर नो फिक्स्ड प्राइसेस वेयर इम्पोज्ड। मिलिट्री पॉलिसीज स्ट्रॉन्ग आर्मी डिफीटेड मंगोल्स। मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंटेड विद न्यू टैक्टिक्स बस फेल्ड। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन थ्रू स्ट्रिक्ट रेगुलेशन, ये मोहम्मद बिन तुगलक। फेस्ड इकोनॉमिक कोलैप्सेस ड्यू टू फेलियर्स। द अटेम्प्ट ऑफ मोहम्मद खिलजी टू कंट्रोल मार्केट प्राइसेस क्या था? लेड एग्रीकल्चरल प्रोग्रेस नहीं। द प्राइस कंट्रोल सिस्टम हैड नो डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, benefited only nobles and courtiers. It was designed to benefit soldiers and common people. Was highly successful. Alauddin's market control system was one of the most successful policy of his reign. Alienated ruler of the masses incorrect क्योंकि though strict the system ensured economic stability. Alauddin established a well-regulated market system in Delhi to stabilize prices. Separate markets were established for grains, groceries, livestock, and general goods. Implemented strict supervision under officials called Sahne Mandi. Intelligence officer Parids and secret spies Munhians monitored compliances. Parids and secret Munhians. First ever price control system of Indian history. Maintained army affordability by keeping commodity prices low. Failure to obey regulation resulted in severe punishment. Which one of the following kings of medieval India began the public distribution system? Alauddin Khilji introduced PDS to regulate essential commodities. Balban strengthening the monarchy. Firuz Shah Tughlaq इंट्रोड्यूस्ड वेलफेयर पॉलिसीज। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक टोकन करेंसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, लेकिन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने वो किया। अलाउद्दीन खिलजी इम्प्लीमेंटेड ए फूड ग्रेन स्टोरेज सिस्टम टू सप्लाई सब्सिडाइज्ड फूड टू सोल्जर्स एंड पुअर। ठीक, फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एंड मेड ग्रेन अवेलेबल at controlled rates. First ever public distribution system in Indian history, similar to modern PDS policies used in India today. Who started the public distribution system in the Sultanate period? Alauddin Khilji. ठीक, which Sultan of Delhi was the first to charge ghari or house tax? Alauddin Khilji imposed ghari tax, house tax या चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स। बलबन ने नहीं। Ghari tax was imposed on residential houses. Charai tax was imposed on milch cattle, aimed at increasing state revenue and weakening local elite power. ठीक, did not burden peasants directly, affecting urban property owners more. What was the boundary between Delhi Sultan and Mongols during the period of Alauddin Khilji after 1306 AD? Ravi Nadi. 1306 AD, Ravi River became the northern boundary. ठीक, Mongol attacks was successfully repelled in 1306 AD near the Ravi River by Malik, Kafur and Ghazi Malik. After this, Mongols did not penetrate deeper into India. Alauddin fortified the borders with military outposts, ensured Delhi's security against future Mongol invasion. With reference to Indian history, consider the following statement. The first Mongol invasion of India happened during the reign of नहीं, ये इल्तुतमिश reign के समय ही हो गया था। ठीक, during the reign of Alauddin Khilji, one Mongol assaulted, marched up to Delhi and besieged the city. Correct. In 1299 AD, Mongols under Kutluk Khwaja besieged Delhi. ठीक, one Mongol assault, marched up to Delhi and besieged the city. ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक जैसे इन 1299 AD Mongols under Kutluk Khwaja besieged Delhi. Muhammad bin Tughlaq temporarily lost portions of the northwest of his kingdom to Mongols. सही है। Tarmasirin Khan, Mongol ruler, invaded India during his reign.
Mongol invaders were a major part to Delhi Sultanate. Alauddin Khilji was the only sultan who effectively repelled Mongol advances. Which of the following sultan appointed a special army to protect the boundaries of empire? Alauddin Khilji created a permanent standing army. Iltutmish strengthened Delhi but not permanent standing army. Nasiruddin Muhammad had a weak military administration. Balban strengthened frontier defenses but did not establish a special army. Alauddin maintained a huge standing army to protect against Mongol invasions, implemented the branding of horses and hulia, soldier identification records, first sultan to provide salaries in cash instead of land grants. This policy inspired later rulers including Sher Suri and Akbar. इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? मार्केट कंट्रोल सिस्टम रेगुलेटेड प्राइसेस एसेंशियल गुड, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंश्योर्ड फूड सप्लाई, घारी टैक्स, हाउस टैक्स, चराई टैक्स, ग्रेजिंग टैक्स, इंक्रीज स्टेट रेवेन्यू. मार्केट कंट्रोल, फर्स्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया. ठीक, मार्केट कंट्रोल, फर्स्ट प्राइस कंट्रोल सिस्टम इन इंडिया. टैक्सेशन, घरी टैक्स, हाउस टैक्स या चराई टैक्स. Military, largest standing army of time. Mongol defense, stopped Mongol invasions permanently. Public welfare, public distribution system introduced. Military reform, maintain a permanent standing army to counter Mongol invasions. Introduced strict requirement policies. Dag and Hulia system. Defeated Mongols multiple times, establishing Ravi River as frontier. Administrative reforms, separated religion from politics, reducing the power of ulemas, established Diwan-e-Mustaq-Raj for revenue collection, reduced the power of feudal lords जैसे खुद मखदूम and चौधरी. Which of the following pair is not correctly matched? वारंगल के रामचंद्र देव जी नहीं थे. देवगिरी के शंकर देव. ठीक, इससे पहले ये तो शंकर, इससे पहले रामचंद्र देव जी थे देवगिरी के. वारंगल के होयसाला के वीर बल्लाल, मधुरा के वीर पांड्या. रामचंद्र देव was the ruler of Devgiri, not Warangal. Warangal was ruled by Prataparuda II of Kakatiya dynasty. Alauddin Khilji's southern campaign were led by Malik Kafur, 1307 to 1312 AD. Prataparudra II of Warangal was initially defeated in 1300 AD and forced to pay tribute. ठीक, who among the following opposed the power of खलीफा? इल्तुतमिश ने तो अब्बासिद खलीफा को मतलब लेक्टिमाइज किया, इल्तुतमिश को लेक्टिमाइज किया. अलाउद्दीन खिलजी practically independent but did not openly oppose Khalifa. Muhammad bin Tughlaq even sent ambassador to Khalif for recognition. Balban claimed to be Jile Ilahi, shadow of God, but respected Khalifa. None of these sultans actively opposed Khalifa authority. Only Mubarak Khilji declared himself Khalifa. सिर्फ मुबारक खिलजी ही था जिसने खुद को खलीफा बता दिया था. By the time of Alauddin Khilji, the Sultan had become independent of the Khalifa in practice. Muhammad bin Tughlaq sought religious legitimacy but ruled without Khalifa influence. ठीक, which ruler of Delhi Sultan declared himself as Khalifa? Mubarak Khilji declared Al-Imam, Ul-Imam, Khalifatullah. Balban strengthened the monarchy but never assumed the title of Khalifa. Alauddin Khilji ruled independently but did not assume the title. Mubarak Khilji declared himself Al-Imam, Ul-Imam, Khilafatullah. Muhammad bin Tughlaq sought approval from Abbasid Khalifa but did not declare himself Khalifa. Mubarak Khilji was the only Delhi Sultan to officially assume the title of Khalifa. He wanted complete religious and political control, unlike his predecessors. Additional insight देखा जाए, Mubarak Khilji rule was short-lived and marked by extravagance. He was assassinated in 1320 by Khusro Khan, leading the rise of Tughlaq dynasty. Whose army was defeated by army of Kakatiya rulers in 1303 at Warangal? Alauddin Khilji. His first attack on Warangal failed 1303 AD में.
In 1303 AD, Alauddin Khilji's first attempt to conquer Warangal failed. The Kakatiya ruler Prataparudra II repelled the invasion led by Fakhruddin Juna and Malik Chhajju. Alauddin launched a second campaign in 1310 AD, led by Malik Kafur, which succeeded. Prataparudra II was forced to become a vassal and pay tribute in gold and jewels. ठीक, अच्छा अब देखते हैं फाइनल समरी। पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसीज क्या थी। मुबारक खिलजी 1306 to 1320 AD was the only Delhi Sultan to declare himself Khalifa. Alauddin Khilji and Muhammad bin Tughlaq ruled independently of the Abbasid Khalifa but never declared themselves Khalifa। ठीक, मिलिट्री कैंपेन क्या थी अलाउद्दीन खिलजी की। एक्सपेंडेड इनटू डेक्कन थ्रू ए सीरीज ऑफ इन्वेजन, लेकिन कैप्चर नहीं किया, ट्राइब्यूट लेता था। यूज्ड ए स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग आर्मी एंड स्पाइनर सिस्टम टू मेंटेन कंट्रोल। फोर्टिफाइड नॉर्थर्न बॉर्डर्स अगेंस्ट मंगोल्स, सेटेड द रावी रिवर एज बाउंड्री। इम्पैक्ट ऑफ खिलजी रूल ऑन फ्यूचर डायनेस्टीज, इंस्पायर्ड लेटर rulers like Sher Shah Suri and Akbar to centralize power. Established a taxation system that influenced Mughal revenue policy, laid the foundation of military expansion of South India. देवगिरी में रामचंद्र देव को हराया 1296 और 1307 में अलाउद्दीन ने और मलिक कफूर ने। वारंगल में प्रतापरुद्र II 1303 में फेल हुआ, फिर 1310 में फिर से वो हराया। पहले फखरुद्दीन जूना और ऐसे कुछ नाम था, चुलक या ऐसे कुछ। होयसाला में वीर बल्लाल 1311 AD में मलिक कफूर ने। मदुरा में पांड्या किंगडम वीर पांड्या 1311 AD में मलिक कफूर ने हराया। ठीक, तो ये हमारा दूसरा पार्ट खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।